स्वागत करुछि आज रे क्लास को ए क्लास रे +3 फर्स्ट सेमिस्टर रो जो मैथमेटिक्स पेपर अछि सेतर यूनिट 3 और यूनिट 4 रो किछिटा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमें देखिबा। तो जदि क्लास टी भल लागिबो हमें शेयर करिबा, कमेंट करिबा एवं लाइक करिबा। सो क्लास टी आरंभ करिबा। सो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस इठी 2 मार्क किंबा 1 मार्क क्वेश्चन आस्थे। The first question is what is partial differentiations? Partial differentiation is a technique which is used when there are more than two independent variables. एक रु अधिक जदि अछि independent variable, more than one independent variable, in that case we use partial differentiations. Okay, partial differentiation is a technique which is used to find derivative when there are more than one independent variables. जदि 2 रु अधिक 1 रु अधिक जदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अछि सही केस रे पार्शियल डिफरेंशिएशन निया जाय। तो एटी डेरिवेटिव केमति निया हुए, we find the derivative of one variable keeping other variable constant. Okay, we find the derivative of one variable keeping other variable constant. जदि z गोटे डिपेंडेंट वेरिएबल छी फंक्शन ऑफ x एंड y, देन हमें z रो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x कले एटा हेबो पार्शियल डेरिवेटिव। सेमति डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू y कले सेटा भी हेबो पार्शियल डेरिवेटिव। से जेते बेले विथ रेस्पेक्ट टू x करूचे सेते बेले y कांस्टेंट, जेते बेले विथ रेस्पेक्ट टू y करूचे सेते बेले x कांस्टेंट। Okay, so this is the partial derivative. It is used to find derivative when there are more than one independent variables. गोटे रु अधिक जदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जदि अछि x y एटी दुईटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हला, in that case we use partial differentiation technique. So partial differentiation is used, it is the technique, it is used when there are more than one independent variables. Next question, write the product rule in partial differentiations. तो partial differentiation रो से गोटे फॉर्मूला रे ही सब होय थाए। तो duv प्लस dvu। तो ई केस रे कोन हबो जदि देई छी z इज अ फंक्शन ऑफ x y जदि देई छी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x जदि करिबा, फर्स्ट फंक्शन रो डेरिवेटिव du by dx into v प्लस dv by dx into u। फर्स्ट फंक्शन रो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x into सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन रो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x into फर्स्ट फंक्शन। जेमती डेरिवेटिव रे जो फॉर्मूला थाए सेम होबो, खाली एटी ए जिंसटा चेंज हला, एटी विथ रेस्पेक्ट टू x करा होची, सेमती विथ रेस्पेक्ट टू y भी करि परिबा। फर्स्ट फंक्शन रो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y into सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन रो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y into फर्स्ट फंक्शन। सो दिस इज द प्रोडक्ट रूल। एटा केते बेले यूज होय थाए जदि गुणन हेकी जदि थिबो, दुईटी फंक्शन जदि गुणन हेकी अछि सेही केस रे हमें प्रोडक्ट रूल यूज करि थाउ। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज टोटल डिफरेंशियल। व्हाट इज टोटल डिफरेंशियल? टोटल डिफरेंशियल माने कोन, जदि दुईटी वेरिएबल जदि चेंज हला, एका थर के जदि दुईटी वेरिएबल जदि चेंज हुए सेते बेले हमें टोटल डिफरेंशियल ताकू कहि थाउ। सो व्हेन बोथ द वेरिएबल चेंजेस, the change in dependent variable is calculated using total differential. So total differential is a technique in which the change in dependent variable is found out by changing all the independent variables. Dependent variable रे केते चेंज हला हमें फाइंड आउट करि थाउ जेते बेले सब वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल सब जदि चेंज होची सेते बेले टोटल डिफरेंशियल यूज करि कि हमें डिपेंडेंट वेरिएबल रे केते चेंज हला ता बाहर कर थाउ। तो यार फार्मूला होची डेरिवेटिव ऑफ z माने होची फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x dx प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू y dy। ये होची टोटल डिफरेंशियल रो फार्मूला।
So total differential is the technique used to find out the change in dependent variable when all the independent variable changes. When all the independent variables change, तो ये टेक्निक यूज करके आम बाहर कर टोटल डिफरेंशियल। ये बहुत एग्जाम रे पड़ी छे, तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। यहाँ नेक्स्ट अच्छी, व्हाट आर द कंडीशन फॉर रिलेटिव मैक्सिमम। जदि मोर देन वन वेरिएबल जदि अच्छी से केस रे जदि मैक्सिमा जदि बाहर करूचे आम से तार कंडीशन कौन, तो कंडीशन कौन हम, कंडीशन एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई मस्ट बी ग्रेटर देन एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स। यहाँ हूँ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पुणी डेरिवेटिव कराई एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई मस्ट बी ग्रेटर देन एफ एक्स वाई इंटू एफ वाई एक्स। यहाँ फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हूँ एफ एक्स एक्स मस्ट बी नेगेटिव। मैक्सिमा यहाँ हूँ कंडीशन। फर्स्ट है एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई मस्ट बी ग्रेटर देन, ओके, ग्रेटर देन एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स। सो दिस इज द कंडीशंस फॉर मैक्सिमम। आ जो पार्शियल डेरिवेटिव जो बाहर कर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स से कौन हो नेगेटिव हो, ओके। यहाँ है रिलेटिव मैक्सिमा यहाँ हूँ कंडीशन। सेमती मिनिमा कौन हम, यहाँ को जब खाली टिके आम चेंज करदे यहाँ मिनिमा हो जदि यहाँ पॉजिटिव जदि है, यहाँ जदि पॉजिटिव हो गला एफ एक्स एक्स जदि पॉजिटिव है मोर देन 0 जदि है, दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा। मिनिमा हूँ यहाँ कंडीशंस, ओके। और नेक्स्ट कही व्हाट आर द कंडीशन फॉर सैडल पॉइंट। यहाँ मिनिमा कंडीशन। सैडल पॉइंट कंडीशन कौन हम, जदि ये टिके जदि चेंज है सेटा सैडल पॉइंट कंडीशन हो। जदि ये पॉजिटिव न है कि जदि नेगेटिव हो गला, यहाँ जदि नेगेटिव हो गला माने ऑपोजिट जदि हो गला लेस देन जदि हो गला, देन दिस इज द कंडीशन फॉर सैडल पॉइंट। यहपरी केस जदि आसला से बेले यहाँ सैडल पॉइंट हो, ओके। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स आम देखी एमती टाइप थाए 2 5 3 9 8 4। दिस इज ए मैट्रिक्स। सो व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, सिंबल्स और नंबर्स बाय एनक्लोजिंग ए ब्रैकेट। नंबर, सिंबल कि लेटर मानकर गोटे ऑर्डरली अरेंजमेंट जोटा गोटे ब्रैकेट द्वारा क्लोज करा होता है, एंड इट इज सब्सक्रिप्टेड बाय इट्स ऑर्डर। ता तले आम तार ऑर्डर को लिखि था 2/2, ये सॉरी यार ऑर्डर हो 2/3, 2/3 हम यार ऑर्डर। सो दिस इज ए मैट्रिक्स। सो व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, सिंबल्स और नंबर्स enclosed by a bracket and subscripted by its order। ता तले कौन हुए तार ऑर्डर लिखा हुए। फास्ट हूँ रो और सेकेंड हूँ कलम। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कलम। ये दुईटी रो से 2 कलम 3टी है से 3। तो यार होगा 2/3 हूँ तार ऑर्डर। ये मैट्रिक्स ऑर्डर हूँ 2/3। सो व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, सिंबल्स और नंबर्स enclosed by a brackets and subscripted by its order। Next question, what is square matrix। square माने कौन, square माने जो थर ये टाइप को आम स्क्वायर कही था जार सब बाहु माने समान होता है वर्ग चित्र। तो सेमती स्क्वायर माने कौन, तार रो और कलम समान हो। नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कलम्स। That is a square matrix। Suppose 2 4 3 5 ये 2/2 है, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किंबा 3 5 7
9 8 2 7 3 1 এটা 3 by 3 hela. So this is also a square matrix. So what is square matrix? The matrix in which the number of rows is equal to number of columns, that is square matrix. जो matrix रो नंबर माने कॉलम जेतोटी थाए रो भी जदि समान जदि थाए दुईटा, then that is a square matrix. Okay, माने 2 by 2 3 by 3 4 by 4 6 by 6 5 by 5 पांचटी रो पांचटा कॉलम दुईटी रो दुईटा कॉलम तीनटी रो तीनटा कॉलम, that is a square matrix. नेक्स्ट व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स माने कौन, जो मैट्रिक्सटा केवल गोटे कॉलम थाए तार, दैट इज ए कॉलम मैट्रिक्स. द मैट्रिक्स व्हिच हैज वन कॉलम, जो मैट्रिक्स रो गोटे ही कॉलम थाए. ओके, सो दिस इज ए कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज वन कॉलम. गोटे ही कॉलम अच्छी, रो अच्छी चारोटी किंतु कॉलम होची गोटे. सो दिस इज ए कॉलम मैट्रिक्स. दिस इज ए कॉलम मैट्रिक्स. देन नेक्स्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स माने कौन, तार डायगोनल एलिमेंट गुड़ा, डायगोनल एलिमेंट कौन होइतिबो गोटे नॉन जीरो हबो, पॉजिटिव ही पारबो नेगेटिव ही पारबो, बाकी जहाँ तळे ऊपर सब हो जीवो जीरो. Suppose 5 3 2. This is a diagonal matrix. खाली diagonal element गुड़ा, diagonal element माने कौन, जमती कर्ण थाए, कर्ण हम diagonal कही था, बड़ चित्र आयत चित्र कर्ण ताको diagonal कहा हुए. तो ये diagonal element माने जो तिर्जक एलिमेंट जोटा गोटे अच्छी से सब कौन थी पॉजिटिव नंबर्स थी कि नेगेटिव हो पार कि जीरो हेनी, बाकी जहाँ सब है सब जीरो हो. दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स. द मैट्रिक्स इन व्हिच द डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरोस एंड अदर एलिमेंट्स आर जीरो is called diagonal matrix. The matrix in which all the diagonal elements are non-zero and all other elements are zero is called diagonal matrix. Next one is identity matrix. Identity matrix माने कौन, diagonal element गुड़ा कौन हेतिबो 1 हेतिबो, diagonal element कौन हबो 1, बाकी सब हो जिवो 0. This is a identity matrix. Okay, so matrix in which the diagonal elements are 1 and all other elements are 0, it is called diagonal matrix. Diagonal elements are 1 and all other elements are 0. This is called identity matrix. Next one is what is singular matrix. The matrix whose determinant is 0. जो मैट्रिक्स रो डिटर्मिनेंट होची 0, द डिटर्मिनेंट इज 0, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स. द मैट्रिक्स इन व्हिच द डिटर्मिनेंट इज 0 माने से मैट्रिक्स रो वैल्यू होची 0, जदि 0 हैला दैट इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट व्हाट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स माने कोन, डायगोनल एलिमेंट रो ऊपर किंबा तळ अंश नंबर्स माने नॉन जीरो हम, बाकी जीरो हेले सेटा हला ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. माने जदि देइछि दिस इज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स माने डायगोनल एलिमेंट्स रो तळ किंबा ऊपर पॉजिटिव माने नॉन नेगेटिव नंबर्स हम, नॉन पॉजिटिव नॉन जीरो हम, पॉजिटिव किंबा नेगेटिव हो पार, आउ तार आउ गोटे पार्ट हो जीरो. दिस इज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. सो व्हाट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. द मैट्रिक्स इन व्हिच द एलिमेंट्स above or below the diagonal elements are non-zero and all other elements are zero is called triangular matrix. diagonal element रो तल
पट कि ऊपर पट पॉजिटिव थी बाकी सब जीरो ओके जदि ऊपर जदि पॉजिटिव है तल पट जीरो हो तले जदि पॉजिटिव नंबर्स कि नेगेटिव नंबर्स जदि है ऊपर पार्टा जीत तो गोटे पार्टा जीरो हो तो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स next one is the scalar matrix the scalar matrix रे कौन हुए diagonal elements यदि equal है if diagonal elements are equal सब देखिए 5 0 0 5 0 0 0 0 5 if the diagonal elements are equal this is a scalar matrix the matrix in which the diagonal elements are equal is called a scalar matrix जदि तार diagonal element गुड़ा जदि equal है that is called a scalar matrix next अच्छी what is singleton matrix सिंगलटन मैट्रिक्स माने होची जहार गोटे एलिमेंट जदि थिबो माने सपोज 7 गोटे ही एलिमेंट अच्छी दिस इज मैट्रिक्स सो दिस इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स द मैट्रिक्स व्हिच हैज वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स द मैट्रिक्स व्हिच हैज a single element is called singleton matrix next what is equivalent matrix what is equivalent matrix the दुईटी matrix रो जदि number of rows and number of columns जदि equal हला both are called equivalent matrix माने suppose 5 3 2 1 0 2 एटा गोटे matrix 9 4 2 5 3 2 एटा गोटे matrix दितर ऑर्डर समान यार ऑर्डर होची 3/2 यार ऑर्डर भी गला 3/2 so both are called equivalent matrix if order of the matrix are equal the matrices are called equivalent matrix okay first matrix रो रो जेते थिबो सेकंड matrix रे रो सेते थिबो फर्स्ट matrix रे कॉलम जेतेटी थिबो सेकंड matrix रे जदि कॉलम भी समान जदि अछि both are called equivalent matrix if the number of rows of first matrix is equal to the number of rows of second matrix and the number of column of first matrix is equal to the number of columns of second matrix both matrix are called equivalent matrix the next one is null matrix the matrix in which all elements are zero the matrix in which all elements are zero is called null matrix जदि सब एलिमेंट जदि जीरो अछि this is a null matrix then next one is what is transpose of matrix what is the transpose of matrix transpose माने होची रो टा जदि कॉलम हे गला कॉलम टा जदि रो हला that is the transpose of a matrix okay suppose 5 3 2 1 देछि या को यदि हम ट्रांसपोज करबा यार यदि ट्रांसपोज नहीं जबा रोटा कॉलम ही जबा कॉलमटा रो सो 5 2 3 1 ही जबा दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स if the column becomes row and row becomes the column that is called transpose of a matrix रो को कॉलम कर देबा एटी कॉलम ही कि थिला 5 2 एबे सेटा रो हे गला 3 1 टा भी एटी कॉलम ही थिला एटी रो हे गला जोटा रो थिला सेटा कॉलम हैला जोटा कॉलम थिला सेटा रो हैला so that is transpose of a matrix next देखिबा what is rank of a matrix rank माने कोन the highest order of non singular matrix non singular माने कोन जो मैट्रिक्स रो डेरिवेटिव डिटरमिनेंट जो मैट्रिक्स रो डिटरमिनेंट नॉन जीरो हैला सेटा होची तारो से ऑर्डर टा होची तारो रैंक ओके सपोज गोटे मैट्रिक्स अछि 2 5 3 2
एथर जदि आम डिटर्मिनेंट जदि करवा 4 माइनस 15 4 माइनस 15 तो माइनस 11 तो यहाँ 0 है तो यार ऑर्डर होगला 2 द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2 2 कहीं 2/2 मैट्रिक्स यहाँ से तार ऑर्डर होगला 2 जदि यहाँ 0 हो जाता ताहले आम तल को जाते 1/1 को जाते ओके तो डिटर्मिनेंट आम बाहर करवा डिटर्मिनेंट जदि नॉन जीरो जदि है आइदर पॉजिटिव है नेगेटिव है तो से ऑर्डरटा जोटा ऑर्डर थी माने 4/4 थी कि 3/3 थी से ऑर्डरटा हो रैंक ओके सो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स व्हेयर द डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो माने जीरो नुह जोटा सेटा होची तार रैंक जदि जीरो होगला तो तल को जीवा 4/4 जदि करुछे तार डिटर्मिनेंट जदि जीरो होगला ताले 3/3 करी करवा ताको छोट करी करवा 3/3 जदि नॉन जीरो है ताले 3 ता हो रैंक जदि पुणी जीरो जदि है 2/2 करवा 2/2 जदि नॉन जीरो है ताले 2 टा हो तार रैंक जोटा नॉन जीरो है जो मैट्रिक्स तो नॉन जीरो है तार ऑर्डर हो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स नेक्स्ट व्हाट इज माइनर minor is the value of subsquare matrix minor is the value of subsquare matrix of an element when the concerned row and columns are eliminated okay what is minor of an element minor of an element is the value of subsquare matrix it is the value of subsquare matrix eliminating the rows and column of the concerned element जो एलिमेंट आम माइनर करुचे से एलिमेंट को काटिकी जो सबस्क्वायर मैट्रिक्स आसब तार वैल्यू मैंने सपोज देखिए 2 5 3 9 3 2 1 0 2 तो ये जदि 2 री माइनर आम काढ़ुचे ताले यार रो आ कलम को काटिदेवा यार वैल्यू आम बाहर कर तो यार वैल्यू हो 6 माइनस 0 माइनस 6 तो 2 रो माइनर है 6 ओके सो व्हाट इज माइनर इज द वैल्यू ऑफ द सबस्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एन एलिमेंट व्हेन द कंसर्न रोज एंड कॉलम ऑफ द एलिमेंट आर एलिमिनेटेड ताको एलिमिनेट कला परे जोटा रहिला तार वैल्यू दिस इज द माइनर ऑफ एन एलिमेंट next is what is cofactor so cofactor of an element is the product of cofactor is the product of minus 1 to the power I plus j into minor what is the cofactor cofactor is the product of minus 1 to the power I plus j and minor of the element तो माइनर जो फास्ट के जमी बाहर कले सेमती करवा ता सहित ये गोटे इंटू करा होची minus 1 to the power I plus j I माने होचे नंबर ऑफ रो j होचे नंबर ऑफ कॉलम जो एलिमेंट आम करुचे से केते नंबर रो रे अच्छी और केते नंबर कॉलम रे अच्छी ताको ऐड कला परे माइनर सहित जदि गणना करवा दिस इज द कोफैक्टर सो कोफैक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ minus 1 to the power I plus j and minor then what is Cramer's rule so Cramer's rule is a rule when which helps to find the value of the variables using determinant okay so what is Cramer's rule is the rule which helps to find out the value of the variables by using determinant technique determinant आम व्यवहार करिकी माने वेरिएबल मानकर तार वैल्यू को बाहर करिथाउ Cramer's rule यूज करिकी सो दिस इज अबाउट द Cramer's rule तो ये सरला वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास रे आम किछिटा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखिबा सो जदि क्लास टी हेल्पफुल हेछि देन प्लीज
like, share and comment. Thanks for watching this video.